आज शायद मेरा लास्ट लेक्चर है। तो हम लोग अभी तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स लगभग कवर कर चुके हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, आपकी आवाज साफ है और ठीक है मैम। हाँ, ठीक। और अगर आपको याद होगा तो हमने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, सब क्रॉप, उसका एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सब पढ़ लिया। आज हम एक नए टॉपिक पे पीपीटी आपके सामने लेकर आए हैं। एट प्रेजेंट हमारी एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो कैन यू हेल्प मी? ये मैं नॉर्मली अपने टैब से करती थी, आज मैं लैपटॉप से कर रही हूँ। तो इसमें किधर शो होगा स्क्रीन शेयर? स्क्रीन से जो 3 बिंदी दिख रही होगी मैम आपके नीचे माइक के बगल में, उसमें नहीं हो रहा है मैम। 3 बिंदी से पहले एक ऑप्शन एरो टाइप का बना हुआ। हाँ, प्रेजेंट नाउ में। हाँ, उसमें करिए, एंटायर स्क्रीन कर दीजिए या टैप कर दीजिए, कोई भी चलेगा। ओके, थैंक यू। ठीक। अभी हाँ, ये यस मैम आ गया। हाँ मैम, आ गया मैम, हाँ मैम, एग्रीटेक इन इंडिया। चलिए, जैसा आपने देख लिया हमारा टॉपिक एग्रीटेक इन इंडिया, तो शुड आई स्टार्ट? यस मैम। As you all know, the agriculture sector in India employs more than 50% of the total workforce and 17 to 18% to the country's GDP. Despite holding such a significant space in the economic equation, agriculture in India has remained confined to traditional methodology since long time. However, this trend has witnessed a transformation in recent years, and the farming sector has begun attracting several large multinationals, leading IT companies, private investors, and young innovators, expanding the scope for agricultural technology in India. As we all know that innovation is very important in modern agriculture, and at present the industry as a whole is facing huge challenges like rising cost of supplies, shortage of labor, changes in consumer preference, and this is not good for our sustainability. There is increasing recognition from agriculture corporations that solutions are needed for these challenges. So in past few years, agriculture technology has seen a huge growth in investments. Major technology innovation in the space have focused around areas such as indoor vertical farming, automation, robotics, and such other innovations. The global market for the precision agriculture is expected to grow at an annual growth rate of 13.09% to reach a market size for over $6.3 billion by the year 2022. And India is expected to see an annual growth rate of 18.29% during same period. A recent example of precision agriculture was witnessed in India when farmers from Andhra Pradesh and Karnataka got text message before they sowed their seeds. They got all information about the sowing, about the pest attack and everything on their phones through SMS, and that is not native language. Tamilians got in Tamil. The main lacuna was found that whenever the new technologies were introduced, it was said that the illiterate farmer will not get any kind of help because it is all in English or the Hindi language.
So the effort was taken that every information is provided in vernacular languages. So the recent inflation of budget smartphones, low price access to high speed internet, and promising smart agriculture startups and the growing regional online contents are helping in this. The government is also doing its best. The recent initiatives are like AgriUdan that mentors startups and ENAM National Agricultural Market that integrates online agriculture markets, allowing farmers and traders to crack best possible deals. Companies like Hitachi are offering geographical information system called GIS, products focused on agriculture besides several other sectors. GIS can help the farmer with crop aggregate estimation and crop damage loss assessments using the current advancement in remote sensing in agriculture. By providing these important agricultural statistics, GIS can help the farmers in increasing their agriculture production, productivity, and profit. So, by bringing the farmers into the fold of the GIS-based integrated crop advisory service, such companies enables the farming communities to make data-based business decision across all processes and aids the government in promoting food security for every citizen. So, friends, it seems that we have entered the world of smart farming. So, What is smart farming? This figure you can see on your screen. It is everything about providing solution for the farmers, integrated water management, collaborate solutions, soil health mapping, increased cultivation of climate resilient crops, crop diversification, and all. So, what is smart farming? Smart farming is the best farming technique that provide that involves higher and advanced productivity with existing farming practices. It is used to enhance product efficiency and the quality of farming products. With all these farming techniques, all these farming techniques increase farmers' quality of living by minimizing the heavy and monotonous work and side by side increasing their incomes also. Smart farming is all about reducing the waste, developing productivity, and full use of resources with remote sensing. It is about precision farming also. It involves various smart farming technologies, the Internet of Things, IoT devices, big data analytics, remote sensing, artificial intelligence, and robotics. It is scientifically proven that using these technologies increases profit, minimizes waste, and also maintains the environment quality. Does the government is doing something for the smart farming? Yes, the Indian government supports smart farming because they want to reduce their effort and enhance their productivity. At present, they are working to double the farmers' income by 2022. They want to increase farmers' income with minimum efforts by smart farming ideas. For this, the Niti Aayog collaborates with the companies that include IBM for the technology-driven solution. For these, farmers get real-time advice and are financed to increase crop productivity. Along with this, the Government of India plans to digitize the PAC's Primary Agricultural Credit Society with a grant up to Indian rupee 2,000 crores. Other support that were initiated by the government for smart farming are managed, that is management of agricultural extension in Hyderabad, mentoring the Agritech startups like PMKSY, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, and One Nation, One Market schemes. So, what are the innovative technologies that are used to enhance our smart farming? Firstly, product innovations. There is a requirement for innovation in products. Those products which are being grown from olden times that needed to be updated. For that, the new technology introduced in the market which are designing fully new kinds of food.
These products, which are impossible to grow, are tested in lab. Digital marketplaces, the government of India started ENAM facility for the farmers of India. The ENAM National Agriculture Market is an electronic trading portal which creates network between the existing APMC mandis for the farmers all over India. Its main aim is to promote equality in agriculture market. From this plan, smoothness between the buyers and the sellers created, and it promotes real-time pricing. Operative softwares, it will help farmers to make better and operational decisions, save money, track resources or productivity. Skill building tools in Indian farming. There is a large scope for skill building also. Farmers produce which they learn from their parents and ancestors only. They don't know how to use these newly introduced technology. For that, skill building tool should be introduced in the market for the farmers and introduce them with latest farming technique. It includes hotline voice services, videos, mobile apps and others. These tools help farmers to share experiences and learn new and innovative things. I have earlier told you that IIPR in our Kanpur is also providing such training schedules for the farmers. They are giving workshops, they are training the lot who are applying in recent few time. Recently, I just observed on the mobile when we open the Google app. I think you should have also opened recently. Number of advertisements are there regarding joining of this INAM and how to connect with the farmers portal. Number of new technologies are introduced on the Google app also. Farmers are just to open it, just to apply for it. They will get their certificate and they will go for that training. They can have online training also. So these skill building tools are so important. So because farmers can use them only when they are trained in it. So what are the ideas behind this? This idea of indoor vertical farming we can also use in our urban areas. Basically, it was introduced for urban farming. Nowadays, it is, don't open this door please. Nowadays, this is also introduced in the rural areas to just to help those farmers who have smaller spaces. This indoor vertical farming can increase crop yields, overcome limited land area and even reduce farmers' impact on environment by cutting down distance traveled in the supply chain. Indoor vertical farming can be defined as the practice of growing produce stacked one above another in a closed and controlled environment. By using growing shelves mounted vertically, it significantly reduces the amount of land space needed to grow plants compared to traditional farming methods. Vertical farms are unique in that some setups do not require soil for the plant to grow. They just use this vermicompost and coco pit. Vertical farmings are basically for hydroponic, whereas vegetables are also grown in a nutrient-based bowl of water or aeroponic, where the plant roots are systematically sprayed with water and nutrients. For sustainable urban growth along with rural growth to maximize crop yield with reduced labor costs, the advantages of indoor vertical farming are apparent. Vertical farming can control variables such as light, humidity, water to precisely measure year-round increasing food production with reliable harvest. The reduced water and energy usage optimizes energy conservation. Vertical farm uses up to 70% less water than traditional farms. Labor is also greatly reduced by using robots to handle harvesting, planting, and logistics, solving the challenge farms face from the current labor shortage in the agriculture.
Next is livestock farming technology. The traditional livestock industry is a sector that is widely overlooked and underserviced, although it is arguably the most vital. Livestock provides much needed renewable natural resources that we rely on every day. Livestock management has traditionally been known as running the business of poultry farms, dairy farms, cattle ranches, or other livestock related agri-businesses. Livestock managers must keep accurate financial records, supervise workers, and ensure proper care and feeding of animals. However, the recent trends have proven that technology is revolutionizing the world of livestock management. Sensor data technologies have huge benefits for the current livestock industry. It can improve the productivity and welfare of livestock by detecting sick animals and intelligently recognizing room for improvement. Computer vision allows us to have all sorts of unbiased data that will get summarized into meaningful, actionable insights. Data-driven decision making leads to better, more efficient and timely decisions that will advance the productivity of livestock herds. Next is modern greenhouses. In recent decades, the greenhouse industry has been transforming from small scale facilities used primarily for research and aesthetic purposes to significantly more large scale facilities that compete directly with the land based conventional food production. Nowadays, in large part, due to the tremendous recent improvements in growing technology, the industry is witnessing a blossoming like no time before. Greenhouses today are increasingly emerging that are large scale, capital infused, and urban centers. As the market has grown dramatically, it has also experienced clear trends in recent years. The modern greenhouses are becoming increasingly tech heavy, using LED lights and automated control system to perfectly tailor the growing environment. Successful greenhouse companies are scaling significantly and located their growing facilities near urban hubs to capitalize on the ever increasing demand for local food. To accomplish these feats, the greenhouse industry is also becoming increasingly capital infused, using venture funding and other sources to build out the infrastructure necessary to compete in the current market. On your screen, you can see some automated trucks and tractors. So next is our farm automation. Farm automation often is associated with smart farming. It is a technology that makes farms more efficient and automates the crop or livestock production cycle. An increasing number of companies are working on robotics innovation to develop drones, autonomous tractors, robotic harvesters, automatic watering, and seeding robots. Although these technologies are fairly new, the industry has seen an increasing number of traditional agriculture companies adopt farm automation into their processes. New advancements in technologies ranging from robotics and drones to computer vision softwares have completely transformed modern agriculture. The primary goal for farm automation technology is to cover easier mundane tasks. Some major technologies that are most commonly being used by the farms include harvest automation, autonomous tractors, seeding and weeding, and drone. Farm automation technology addresses major issues like rising global population, farm labor shortages, and changing consumer preferences. The benefits of automating traditional farming processes are monumental by tackling issues from consumer preferences, labor shortages, and the environmental footprint of farming. What technologies are used? Uh, First is harvest automation, harvesting fruits, vegetables,
have always proven to be difficult problem to automate. Harvest robots must be gentle with the produce to avoid bruising and damage. Agritech has successfully developed the first robot for gently harvesting the strawberry, no matter where and how they are. From a flexible mobile platform up to 24 robotics manipulators work together to pick the fruit, which meets the farmer's quality standard. There is another company called Abundant Robotics. It is the world's first commercial robotic apple harvest. Their machine handles fragile fruits by using a vacuum instead of any claw or hand-like graspers to pull the apples from the branch. You can see these robotic machines developed by Agrobot. Then the autonomous tractors. The autonomous tractors can be controlled remotely or even pre-programmed to give full autonomy to a producer. Rapid tractors, autonomous tractor devices delivers value to crop farmer not just through a reduction in labor cost but through increased efficiency across operations and increased yield. Tractor automation kits are even being developed by Peer Flag Robotics company that makes automation more accessible for farmers by affordably retrofitting existing tractors with cutting-edge driverless technology and implement control. Excuse me, ma'am. Ma'am, country like India, is it good to use this advanced technology in the agriculture sector? We have to introduce this. So the Indian government is working on this, and there are, I just told you, there are agriculture credit schemes for our farmers. Moreover, these machines are developed by Indian companies also in collaboration with multinational companies in much cheaper rate. And they are efficient for small farmers also who are having small holdings. मैम बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट और क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में? हाँ, लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अगर आप एट प्रेजेंट की सिचुएशन से वाकिफ हैं तो हमारे फार्मर्स अभी क्या कर रहे हैं? एट प्रेजेंट व्हाट दे आर डूइंग, वो अपनी लैंड मोस्टली सेल कर रहे हैं और वो उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि इतने सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और अगर हमारा लेबर फोर्स वहाँ लगा है तो हमें इतने सारे इनोवेशंस करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? हाँ, एट प्रेजेंट हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ फ्यूचर. ये हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं जो हम 2025 तक के लिए प्लान कर रहे हैं. और सेम अगर यही बात हम सोचते हैं, हमारे पास्ट की तरफ जाते हैं, तो व्हेन द कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड तब हमें ऐसा लगा था कि यस हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें ग्रुप में आ जाएंगे. बट आज हम क्या देखते हैं कि आप एक हमने ना कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट के ग्रुप में नहीं आए, बल्कि हमने एक नया सेक्टर ही डेवलप कर लिया. हम एक IT कंट्री बनते जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि हमें आगे की तरफ भी बढ़ना होगा. और अभी की सिचुएशन, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैलेंजेस क्या रहे हैं, हमारी स्कीम्स अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स में या मेरे PPTs में देखी होंगी या वो मटेरियल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, कि ऐसी बहुत सी स्कीम्स चल रही हैं. जैसे हमने आपसे कहा था ई किसान सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, ई पोर्टल्स हैं और हमारे किसान उनसे जुड़ रहे हैं. और हाँ, एक वेरिएशन है जो कि मैंने आपसे क्लास के दौरान भी कहा था कि अगर हम अपने इंडिया में सभी स्टेट्स को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, वहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हमें मिलती है, क्योंकि हमें लगता है और देखने में अभी प्रूफ भी है कि साउथ एंड महाराष्ट्र रीजन और गुजरात रीजन की तरफ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है बनिस्बत के हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार. तो उसके लिए ही तो हमने स्किल की अभी बात, स्किल ट्रेनिंग की बात की कि यस वी आर प्रोवाइडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो हमें उनको स्किल्ड भी बनाना पड़ेगा. मैम इन शॉर्ट, हाँ जी मैम इन शॉर्ट मतलब ये कि ये जो नई टेक्नोलॉजी हम लाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में हो या इंडस्ट्रीज की फील्ड में हो, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता है. या एग्जैक्टली, जैसा कि हम लोग सोशल सेक्टर में देखते हैं कि मैं कुछ कहना चाहूँगा. जी सर. या कि जैसा कृष्णा
पुष्पा जी ने कहा टेक्नोलॉजी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात कही, लेकिन इस चीज का सारा, इस चीज को क्यों भूल जाते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि उसको निकालने में टेक्नोलॉजी बड़ी हेल्प करती है। और दूसरी चीज, हम एम्प्लॉयमेंट के तर्क के आधार पर एग्रीकल्चर को पिछड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, प्रोसेस, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जैसे ही होगी तो वहां से डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट निकलेगा और वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में लग करके कहीं बेहतर एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी और इनकम जनरेट करेगा। उस तर्क के आधार पे उसकी टेक्निक से पीछे रखना ये उचित नहीं है और ना इस दिशा में हो रहा है। इसीलिए सरकारें काम कर रही हैं और ये चीजें आगे फ्यूचर और बेहतर लाएंगी। यस, और देखिए जब भी हम एक जो हमारा ट्रांजेक्शनरी वो एक टाइम आता है ना, पीरियड, उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ रही, लेकिन ये हमारे बेटरमेंट के लिए है। फ्यूचर हमारा और ब्राइट ही होगा। हम फॉरेन मार्केट में compete कर पाएंगे, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो और बेटर क्वालिटी हो पाएंगे ना। और जो वेस्टेजेस हैं, जो हमारा इतना टाइम लगता है, लेबर शॉर्टेज भी है। अगर अब जैसे अभी मैंने स्ट्रॉबेरी रोबोट को कलेक्ट करने के रोबोट की बात की है, आपको पता है स्ट्रॉबेरी आप सबने देखी होगी, जब उसको तोड़ा जाता है, आप अगर उसे मैनुअली करते हैं तो नंबर ऑफ आइटम गेट डैमेज्ड, प्लस कई सारी चीज़ें, अगर आप उसको बिना डैमेज किए, उस ब्रांच को बिना तोड़े, आपको कैसे उसको लेना है, उसके लिए एक्सपर्ट आपके लिए रोबोटिक्स बन रहा है, जो कि आप एक में कितना टाइम लगाएंगे, आपकी मशीन एक साथ कितने कलेक्ट करेगी, आपका टाइम सेव होगा, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। इसके अलावा जैसे भी हम आगे चलेंगे, अभी इसमें मूव करते हैं हम पीपीटी में, आप देखेंगे ड्रोन्स है हमारे पास, वो किस तरह से पूरे फार्म पे एक साथ आपके स्प्रेइंग का काम कर रहे हैं, जो कि हम मैनुअली शायद उतना परफेक्टली नहीं कर पाए। तो अगर हमें आगे की तरफ मूव करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग अपने घरों में स्मार्टफोन्स एंड ऑल एंड दीज, अब हमारा ई लर्निंग भी स्टार्ट है, हम लोग मूव तो कर रहे हैं, क्या हमें स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है? हमारे एक ट्रेडिशनल टीचिंग से जब हम इस टीचिंग में आते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी नेट प्रॉब्लम करता है, कभी हम शायद उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, बट वी आर ट्राइंग ना। तो एग्रीकल्चर का फील्ड हम कैसे छोड़ दें, राइट? तो शैल आई स्टार्ट अगेन? एनी डाउट्स? यस मैम। किसी और को कुछ कहना है? नो मैम। So I was on seeding and weeding. So robotics developed for the seeding and weeding can target specific crop areas. In seeding, this can easily reduce labor and maintenance tasks on the farm. Weeding robotics can be incredibly accurate and reduce pesticide usage by 90% with computer vision. मिस करिश्मा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आप कह रहे थे ना। हाँ, नेक्स्ट, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज टू प्रिसाइजली स्प्रे herbicides only where needed and with exactly what's needed. This gives farmer a new way to control and prevent herbicide-resistant weeds. Eco Robotics is another company that produces a weeding robot that is the first ever completely autonomous machine for a more ecological and economical weeding of row crops and meadows and intercropping cultures. You can view all these weeding robots. See how efficiently they can work on this row farming. Drones can be used to monitor conditions remotely and even apply fertilizers, pesticides and other treatments from above. They can also quickly and cost effectively identify problem areas with imagery and infrared analysis to help farmers diagnose issues. American Robotics is developing a fully autonomous robot as a service with an autonomous drone-based station and analytic platform that provides insights to growers at resolutions, frequencies and speed never before possible. You can see these drones. Now the precision agriculture. मैम एक चीज और समझ में आई कि जैसे हम ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी राइज होगी, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी पर कैपिटा इनकम पे।
है ना मैम? तो वो फिर वो हमारे लिए और फायदेमंद है। ओके मैम। ओके, और कोई डाउट्स है बच्चों? नो मैम, नो मैम। तो अब हम ऐसा नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो हमारा दे ही दिया, और नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन। एक सेकंड, स्लाइड्स पे जाना है, जस्ट अ सेकंड। Blockchain. Blockchain's capability of tracking ownership records and tamper-resistant can be used to solve urgent issues such as food fraud, safety recalls, supply chain inefficiencies, and food traceability in the current food system. Blockchain's unique decentralized structure ensures verified products and practices to create a market for premium products and transparency. Food traceability has been at the center of recent food safety discussions, particularly with new advancements in blockchain applications. Due to the nature of perishable food, the food industry as a whole is extremely vulnerable to making mistakes that would ultimately affect human lives. When foodborne disease threaten public health, the first step to root cause analysis is to track down the source of contamination, and there is no tolerance for uncertainty. Consequently, the traceability is critical for the food supply chain. The current communication framework within the food ecosystem makes traceability a time-consuming task since some involved parties are still tracking information on paper. The structure of blockchain ensures that each player, that means farmer and the intermediaries and the purchasers, along the food value chain would generate and securely share data points to create an accountable and traceable system. Vast data points with labels that clarify ownership can be recorded promptly without any alteration. As a result, the record of the food item's journey from farm to table is available to monitor in real time. You can see this chart from farmer, then processor to distributor to retailer, then customer and regulator is the whole, our government which is regulating the whole food chain system, that is the blockchain. Next is the use of blockchain in food go beyond ensuring food safety. It also adds value to the current market by establishing a ledger in the network and balancing market pricing. That giving access to data would create a holistic picture of supply and demand. The blockchain application for traders might revolutionize the traditional commodity trading and hedging as well. Blockchain enables verified transactions to be securely shared with every player in the food supply chain, creating a marketplace with immense transparency. Now, the most important is the artificial intelligence. You can view all these pictures. I think they are not that much clear. I just talked about strawberry robot harvester. You can have a look. मैम ये ब्लॉकचेन, मैम ये जो ब्लॉकचेन अभी आपने पढ़ाया, इसको थोड़ा सा आसान करके समझा दीजिए। हाँ, इसको बहुत आसान करके अगर हम समझाएं तो बेसिकली ये था कि जो हमारे फूड में दो, एक तो एडल्टरेशन के साथ कंटामिनेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। जब फार्म से चलता है हमारा फार्मर लेके, तो आपको पता है सब्जी हो या जो भी आपके इस तरह के नॉन पेरिशेबल गुड्स हो, गेहूं हो, अनाज, ये सब मंडियों में आता है, राइट? मंडियों में आने के बाद कोई ट्रेसिंग रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता कि कितना आया है, किस रेट पे गया है। मीडियरीज जो बीच में इंटरमीडियरीज जो हैं, उन्होंने फार्मर्स को उनके उस रेट पे जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दिया है या नहीं दिया है, प्लस जो क्वालिटी वहाँ शो की गई है,
आपको पता है ग्रेडिंग होती है सारे उसकी, हमारे जो भी अनाज वगैरह जाता है उसकी ग्रेडिंग होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वहाँ चेक होता है कि किस ग्रेड का है, उसी के हिसाब से उसकी रेट्स दिए जाते हैं। ये वाकई ट्रांसपेरेंट हुआ है या फार्मर को चीट किया गया है? पहला लेवल तो यही है, यहाँ से नहीं समझ में आता जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं कि हुआ क्या, और उसके बाद में कितनी क्वांटिटी में वहाँ माल आया है, लिया गया है, और कितना उसके आगे फर्दर चेन में सप्लाई किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी न्यूज अगर आप देख रहे थे गूगल में, बहुत मैं देख रही थी, सरसों का तेल धड़ाम हुआ, फटाफट खरीद लीजिए, लेकिन आप मार्केट में जा रहे हैं, ये सिचुएशन नहीं है। ये एक अफवाहें क्रिएट करके प्राइसेस को इफेक्ट किया जाता है। उसका भी मेन कारण क्या है? क्योंकि ब्लॉकेजेस है, लोगों को पता नहीं है कि किस रेट में फार्मर प्रोवाइड कर रहा है, किस रेट में क्या हो रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। काफी साल पहले आई थिंक जब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उस साल जब कांग्रेस थी तो प्याज काफी महंगा हुआ था। जी मैम। इवन इतना ज्यादा हो गया था कि पॉलिटिकल इशू बन गया था। आपको पता होगा इंडिया में प्याज हमारा नासिक में होता है, सबसे बड़ा नासिक ही वहाँ का सप्लायर है हमारे देश में प्याज का। नासिक में जो किसान था, जब आप ये बताएं कि सारे इंडिया में प्याज बहुत 180 रुपए किलो चला जा रहा है, लोगों को खरीदने में दिक्कत हो रही है, कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे में एक व्यक्ति तो फायदेमंद होना चाहिए जो कि हमारा किसान है। लेकिन उसी टाइम पर नासिक में कई किसानों ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको अपने प्याज का प्रॉपर रेट ना मिलने से वो कर्ज नहीं चुका पा रहे। कईयों ने प्याज को यूं ही अपने पास रखा था, वो मार्केट में उनको उस रेट पे नहीं जा रहा था जिस रेट पे उनका जो लागत लगी थी, तो वो सड़ गया प्याज। ये उस टाइम की कई रिपोर्ट्स थी। तो ये क्या शो कर रहा था? एक तरफ तो हम दिखा रहे थे कि इतना प्राइस है, मार्केट में सप्लाई नहीं है, और दूसरी तरफ सप्लाई जहां से होती है वहां स्टोर में इतना माल पड़ा था जो कि बाहर बिक नहीं रहा था। तो ये क्या था? ये एक तरह का चेन, जो हमारा जो ब्लॉकचेन की अभी हमने बात की है, जो इस तरह का वो नहीं था ना उस समय, पता ही नहीं था बाकी स्टेट्स में कि कितना प्याज हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। तो ये बीच में इंटरमीडिएरीज जो थे, उन्होंने उस सारे प्याज को दबा दिया था और महंगी कीमतों पे यहाँ लाए थे और वहां के किसानों को रेट नहीं मिला। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जब हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो हम सब कुछ जैसे डिजिटलाइज कर रहे हैं, द मोमेंट वो जो हमारा प्रोड्यूस चलेगा, फार्म में आएगा, वहां पर स्टैंडर्डाइज होगा, उसका रेट लगेगा, और ये सब कुछ आपका पोर्टल पे होगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी। इसी के साथ उसकी केयर टेकिंग भी उसी तरह से कि आप जब उसे गोडाउन में ले जा रहे हैं तो वहां पर भी सब कुछ आपका टेक्नोलॉजिकल उसमें पूरा पोर्टल पे होगा कि कौन सी टेक्निक, कौन सा समय, किस समय क्या आया, उसके लिए क्या क्या अप्लाई किया गया, सब विजिबल होगा। राइट? और कोई डाउट? ओके मैम। नहीं मैम, ठीक है, समझ गई। कंफ्यूज तो नहीं हो गया बेटा? नहीं। पता नहीं आपको मैं प्रॉपर समझा पाई हूँ कि नहीं? जी नहीं मैम, समझ में आ गया। ओके। करिश्मा है आप? यस मैम। ओके। तो कहाँ थे हम? The rise of digital agriculture and its related technology has opened a wealth of new data opportunities. Remote sensors, satellites, and UAVs can gather information 24 hours per day over an entire field. These can monitor plants' health, soil condition, temperature, humidity, etc. The idea is to allow farmers to gain a better understanding of the situation on the ground through advanced technology that can tell them more about their situation than they can see with their own eyes. And not just more accurately, but also more quickly than seeing it walking or driving through the fields. Remote sensors enable algorithms to interpret a field's environment as statistical data that can be understood and useful to farmers for decision making. Algorithms process the data, adapting the learning based on the data received. The more inputs and statistical information is collected, the better the algorithm will be at predicting a range of outcomes. And the aim is that farmers can use this artificial intelligence to achieve their goal for a better harvest through making better decisions in the field. So, what are the benefits of smart farming? We were just talking about this increase in efficiency,
By smart farming, farmers can increase their efficiency with advanced technology. They can produce more products in limited period of time. They get inspected fast, forecast matters before they happen, and make important decisions on keeping them away. Expansion with the use of smart farming technologies, expansion in farming take place. All the agriculture activities take place on time and are of good quality. The short food chain completes on time for these technologies, and everyone gets proper food at affordable price. For proper use of resources, by smart farming technology, resources are used fully and properly. These resources include energy, water, and land. Cleaner process. It is a cleaner process that can save energy, water, make farming greener. These technologies evaluate the use of fertilizer and pesticide. These processes provide organic and cleaner produce in comparison to traditional farming methods. Next, uncertain weather changes, air quality, humidity, soil in the fields, and the health of crops monitored by smart farming technologies. It provides real-time monitoring that can predict the condition of the crop. This provides professional advice in extreme weather changes that can save the crops. Improve product quality, we already discussed it. Reduced environmental footprint, how automation practices can make agriculture more profitable while also reducing the ecological footprint of farming at the same time. Site-specific application software can reduce the amount of pesticides and fertilizer used while also reducing the greenhouse gas emissions. Labor efficiency. Labor is over 50% of the cost to grow a farm, and 55% of farmers say that they are impacted by labor shortages. Because this 31% of farmers are moving to less labor intensive crops. However, there is huge potential with harvest robots. Routine tasks can be automated with robotic technology, reducing the labor cost and manpower needed amidst a labor shortage in the agriculture industry. I have shown you the strawberry robot harvester. Consumer benefit. The consumer preference are shifting towards organic and sustainably produced products, while automation technology produced reaches consumers faster, fresher, and more sustainable. Increasing the productivity from automation increases the yield and the rate of production, therefore reducing costs for consumers. So we have come to the end of my presentation. To conclude, the new age agriculturists are developing innovation and technology to foster a new green revolution, and precision farming in India is emerging as a popular feature of this transition. Precision agriculture is the application of current amount of inputs at the right time to the crop to increase the productivity and maximize the yield. The use of GPS allows precise mapping of farmland. This, along with appropriate softwares, informs the farmers about the status of their crops and identifies the areas of farm that requires water, fertilizer, and pesticides, enabling them to make well-informed decisions. So, we can see that we are moving towards a new era in agriculture sector. The need here is to make sure that these innovations and equipments reach to the smallest fragments of the farmers and to each corner of India, leaving no leakages and no bottleneck. So, thank you. Yes. What's the time? Um, so, yes, you can ask Karishma, Shruti, you can ask anything. No, ma'am, nothing. We don't want to ask anything. Okay.
No questions at all. Shruti, are you there? Yes, ma'am. No questions. कैसे बेटा? मैम ठीक हूँ. कुछ मैम कोल्ड चल रहा है इस टाइम. हाँ, even I have fever. Vaccination लिया? Yes, ma'am. मैम टू लेट? हाँ, कुछ मेडिकल इश्यूज थे. ओके ओके. तो बच्चों, शुड आई जस्ट फिनिश माय क्लास हियर या मुझे और भी कुछ लेना होगा? समीर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ लें कि क्या क्लास आज अभी एंड कर सकते हैं या 4:30 तक ही मुझे कुछ डिस्कस करना होगा तो मैं एक और पीपीटी डिस्कस कर लूँगी फिर. नहीं मैम, हमारे ख्याल से कर सकते हैं. 4 बजे तक तो क्लास चलता है, वो सर भी 1 घंटे मैम 4 बजे तक ही चलता है, आप कर सकते हैं. आरएम की क्लास भी 1 ही घंटे चलते हैं सर, 1-1.25 घंटे बस. ओके. तो अभी तो ये एक्चुअली मेरे साथ ये था कि मैं क्या लेके आऊँ आपके पास, आपको क्या दूँ इस बार पीपीटी में. तो इधर टाइम मिल गया था मुझे, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा इनोवेशन जो अभी तक हमारी बुक्स में आया नहीं है, अभी जस्ट नेट पे ही आया. एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगी. मैं कई दिनों से, अभी मैंने बीच में कहा भी है कि जब हम गूगल ऐप अपना फ़ोन पे ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारी, आपने देखा होगा, न्यूज़ आ रही रहती है. जिसमें बीच में एड भी आते हैं, आपने देखा होगा. उसमें आप, मैं डेली देख रही हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यू इनिशिएटिव्स उसमें दिए जा रहे हैं. अभी मैं ट्राई कर रही थी खोल के कि देखूँ मैं, तो मैं आपको इसका व्यू भी दिखा सकूँ. जब हम गूगल पे जाते हैं तो न्यूज़ के नीचे ही आपको रोज मिलता है. कल मैंने उसको पूरा ओपन करके देखा तो वो एक पोर्टल था, अभी मुझे उसका नाम बिल्कुल रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, कल सोचा था मैं आपको दिखाऊंगी. तो उस पोर्टल पे था कि आप पूरी स्कीम दी हुई थी और उन्होंने कहा था आप इसको 15 दिन के अंदर ज्वाइन करें. इट वाज फॉर द फार्मर्स. वो लोग ज्वाइन करते, उसके बाद उनको ई कोर्स, उनका ई वर्कशॉप चलने वाली थी, और नहीं तो उनको एक जगह दी गई थी कि आप ये 5 जगह हैं, यहाँ आप जाके फिजिकली आप इस वर्कशॉप को कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं. और ये दिया गया था कि जितने एप्लीकेंट्स आएंगे और जो यहाँ ज्वाइन करेंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट से उन टूल्स को खरीदने के लिए. जो अभी करिश्मा ने बात कही थी वो बिल्कुल सही बात थी कि क्या हमारे गरीब फार्मर्स इतने हाई टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद पाएंगे. यस, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है जो कि स्किल्ड हो रहे हैं, जो कि उनके पास से ट्रेनिंग ले रहे हैं. 50% तक का उनको सब्सिडी देने की बात उस स्कीम में की गई. और इस तरह की कई स्कीम्स हम चल रहे हैं. यस, हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं. और करिश्मा, हो सकता है हमें दिखता हो कि हमें प्रॉब्लम आएगी, हम इसे कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमें लगता है हम इंडियंस हम सीख जाएंगे और दिखा देंगे. ओके. और बाकी जो मेरे पास मटेरियल है आई विल प्रोवाइड यू, समीर को और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूँगी. ओके जी मैम, थैंक यू. सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, कोविड से बच के रहें. जी मैम.